चलिए, तो हमने वुड कर लिया था ना, वुड हमारा खत्म हो गया था, वी आर थ्रू विथ वुड। मैंने बाइकोलेटरल में क्या बताया आपको? मैंने आपको ये नहीं बताया कि बाइकोलेटरल में, या तो हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो, कि फ्लोएम जो होता है अंदर और बाहर होगा और जाइलम जो है मिडल में होगा, ये नहीं बताया है बाइकोलेटरल में। तो इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा, ये मेरे पार्ट में एरर है। ठीक है, वो पढ़ाते पढ़ाते कभी हो जाता है भाई, इंसान ही हो। नहीं, ये सही है, अगर मैंने उल्टा बताया तो गलत है, इसको ठीक कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए प्लीज, इट इज फॉल्ट ऑन माई पार्ट। ठीक है, तो बाइकोलेटर में क्या होगा, अंदर बाहर फ्लोएम होगा, ठीक है, और सेंटर में जाइलम होगा, दैट इज बाइकोलेटर ना। नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग इज कॉर्क कैम्बियम। ठीक है ना, हमें पता है कि देयर इज कॉन्टिन्यूस सेकेंडरी ग्रोथ, और जब कॉन्टिन्यूस सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ वास्कुलर टिश्यू विल बी प्रोड्यूस, स्पेसिफिकली सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो जब सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस हो तो गर्थ बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगा, जब चौड़ाई बढ़ेगा तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये प्रेशर क्या करेगा, पहले अपने सराउंडिंग के सेल्स को क्रॉस करेगा, कॉर्टेक्स के सेल को क्रॉस करता जाएगा, फिर एपिडर्मिस को रप्चर कर देगा और अंडरलाइंग सरफेस को एक्सपोज कर देगा। तो जो अंदर का चीज है वो एक्सपोज हो गया क्योंकि एपिडर्मिस रप्चर हो गया। अब क्या है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। In order to provide protection to the underlying structure, there is development of core cambium और phellogen। और ये core cambium और जो phellogen होता है, it develops from cells of cortex। थोड़ा डाउन लिखिए इसको पहले। Due to continuous secondary growth, due to continuous secondary growth, large amount of secondary vascular tissue is produced, large amount of secondary vascular tissue is produced. As a result, cells of cortex gets crushed, cells of cortex gets crushed, 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 ठीक है। This ultimately leads to rupturing of epidermis, rupturing of epidermis. As a result, underlying tissue gets exposed, underlying tissue gets exposed in order to provide protection to underlying tissue, in order to provide protection to underlying tissue, there is
development of cork cambium, there is development of cork cambium or phallogen from the cells of cortex, ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए. Cells of phallogen are rectangular in outline. Cells of phallogen are rectangular in outline. Are rectangular in outline. With thin cell wall. With thin cell wall. ठीक है. अब इसको थोड़ा समझो. cells of phallogen are rectangular in outline. Are rectangular in outline with thin cell wall. With thin cell wall. ठीक है, लिख लिया ना. अब देखो, इसको थोड़ा समझो. होता क्या है, ये जो फेलोजेन और कॉर्क कैम्बियम है, इट प्रोड्यूसेस लूजली अरेंज्ड सेल टुवर्ड्स द इनर साइड. ऐसे करके लूजली अरेंज्ड सेल प्रोड्यूस करेगा टुवर्ड्स द इनर साइड. ठीक है, दिस इज नोन एज फेलोडम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो फेलोडम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, इट स्टोर्स फूड मटेरियल. ये खाना स्टोर करता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीडर्म. अभी आगे आपको लिखवा दूंगा मैं. पॉलीडर्म कहते हैं. दैट इज नोन एज पॉलीडर्म. ओके, नाउ ये तो अंदर की तरफ कर रहा है. नाउ टुवर्ड्स द आउटर साइड, this phallogen or cork cambium produces closely packed suberized cells. ठीक है, these are closely packed suberized cells. ठीक है, this is known as phellum or cork. ठीक है, कोई बात नहीं. ये नहीं दिख रहा ना, ये यहाँ ऊपर तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा. कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा बता दूंगा. ये क्या करेगा, इसको ये देखो, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये बहुत बार क्वेश्चन है और आगे भी आएगा. होता क्या है कि जो फेलोजेन है, टुवर्ड्स द इनर साइड इट प्रोड्यूसेस लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल नोन एज referred as phallodam or secondary cortex, and towards the outer side, ठीक है, it produces closely packed suberized cells. मतलब closely packed cells हैं जिसके सेल वॉल पे सुबरिन का डिपोजिशन है, and it is referred as phellum or cork. We call it phellum or cork. Now ये जो phellum और cork है, ठीक है, इसके साथ साथ this phallogen also produces loosely arranged cell towards the outer side. ठीक है, ऐसे करके लूजली अरेंज सेल प्रोड्यूस करेगा. ठीक है,
These loosely arranged cells are known as complementary cell. We call it complementary cell. ठीक है? और ये जो complementary cell है, this complementary cell forms a lens-shaped opening. This lens-shaped opening is referred as lenticell. We call it lenticell. This lens-shaped opening. और इस lenticell का काम क्या है? It helps in gaseous exchange. ठीक है? तो gaseous exchange में lenticell रोल प्ले करता है. फिर से मैं समझा रहा हूं, कुछ समझ लो फिर लिखना. देखो मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका रिजल्टेंट ये होता है कि जो सराउंडिंग उसके सेल्स हैं दैट गेट्स क्रस्ट, वो क्रश हो जाते हैं. ठीक है, अब वो क्रश हो गया. नाउ इन ऑर्डर टू, ये क्रश होते होते क्या होगा, एपिडर्मिस को भी रप्चर कर देगा. तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडरलाइंग टिश्यू विल गेट एक्सपोज्ड. Now, in order to provide protection to the underlying tissue, there is development of cork cambium or phellogen. ठीक है, ये जो cork cambium और phellogen है, that develops from the cells of cortex. ये जिसके cells होते हैं, they are rectangular in outline with thin cellulosic cell wall. अब ये क्या करेगा, towards the inner side it will produce loosely arranged cells, ठीक है, which is referred as phelloderm or secondary cortex. And towards the outer side it will produce closely packed cell known as phellum or cork, and the wall of these cells have deposition of suberin. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये होने के बाद it will also produce loosely arranged cell towards the outer side which is referred as complementary cells. और ये एक फॉर्म करेगा lens shaped opening that is referred as lenticell which helps in gaseous exchange. समझ में आया सबको? लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, मैं आगे लिखवा देता हूं. बताएंगे लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? अरे लास्ट पॉइंट क्या लिखा था ये तो बताओ. विच इज रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन. ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फेलोजेन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फेलोजेन प्रोड्यूसेस loosely arranged cells towards the inner side, loosely arranged cell towards the inner side, which forms phelloderm, or secondary cortex, which forms phelloderm or secondary cortex. ठीक, नेक्स्ट वन लिखिए. In some cases, phelloderm stores food material. In some cases, phelloderm stores food material, and it is known as polyderm. It is known as polyderm. In some cases, phelloderm stores food material. Phelloderm stores food material, and it is known as polyderm. It is known as polyderm. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, towards the outer side, phellogen produces closely packed
superized cell, closely packed, superized. Superized cell known as phellum or cork, known as phellum or cork. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Along with phellum or cork, along with phellum or cork, phellogen also produces loosely arranged cells, known as complementary cells, towards the outer side, which forms lens shaped opening known as lenticell, and it helps in gaseous exchange. ना, ये डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. डायग्राम बना लीजिए. नहीं पढ़ना रिदम, एंटीक्लाइनल और सिंक्लाइनल डिवीजन आपको नहीं पढ़ना. ठीक है, जरूरत नहीं है जिसका दिमाग नहीं लगाना. ठीक है, अब देखो ये जो तीन चीज है, ठीक है, दैट इज फेलम, फेलोजेन एंड फेलोडम. ये जो तीन चीज है ना, इन तीनों को एक साथ हम लोग कहते हैं पेरिडम. त्रडम, फेलम, फेलोजेन एंड फेलोडम. Phellum, phellogen and phellodum together referred as, हाँ वही है, together referred as peridum. ठीक है ना. अब देखो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे मान लो ये कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम. दिस इज योर वास्कुलर कैम्बियम. तो हमें पता है कि वास्कुलर कैम्बियम जो है अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करता है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करता है. यही होता है ना, यही होता है ना भाई. यही होता है ना, हाँ या नहीं तो बोलो. Towards the inner side it will produce secondary xylem and towards the outer side it will produce secondary phloem.
ना अब देखो, अब ये जो है, ये तो वास्कुलर कैमियन के बाहर कॉर्टेक्स के रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसके बाहर फिर पेरिडर्म होगा, ठीक है। सो एवरीथिंग एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम, जो भी वास्कुलर कैम्बियम के बाहर है, इट इज रिफर्ड एज bark. We call it bark. So everything exterior to vascular cambium is referred as bark. ठीक है, that is secondary phloem and periderm. Periderm, next point लिखिए, everything exterior to everything exterior to vascular cambium is known as bark, is known as bark, B-A-R-K, bark. That is secondary phloem plus periderm. That is secondary phloem plus periderm. ठीक है, लिख लिया ना। जो बार्क पहले बनता है, फर्स्ट फॉर्म बार्क, उसको हम लोग कहते हैं अर्ली बार्क और सॉफ्ट बार्क, अर्ली बार्क और सॉफ्ट बार्क। राइट डाउन, फर्स्ट फॉर्म बार्क इज नोन एज, फर्स्ट फॉर्म बार्क इज नोन एज अर्ली बार्क और सॉफ्ट बार्क। फर्स्ट फॉर्म बार्क इज नोन एज अर्ली बार्क और सॉफ्ट बार्क, ठीक है। एंड later form bark is known as, and later form bark is known as late bark or hard bark. Later form bark is known as late bark or hard bark. ठीक है ना, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों ने बैडमिंटन खेला हुआ, शटल कॉक, उसके बेस पे कॉर्क लगा रहता है। वाइन में स्टॉपर बॉटल में कॉर्क यूज होता है, वाइन का बॉटल जब स्टॉपर लगता है उसमें कॉर्क होता है, कॉर्क बहुत जगह यूज होता है, तो वो यही कॉर्क है। ये कॉर्क कमर्शियली कहां से मिलता है, किस प्लांट से हम लोग इसको लेते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कमर्शियली cork is obtained from plant, commercially cork is obtained from plant Quercus suber. Commercially cork is obtained from plant Quercus, Q-U-R-C-U-S, Quercus suber, S-U-B-E-R, ठीक है ना। एक बार एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन लिखिए, which of the following is function of lenticell? Which of the following is function of lenticell? फर्स्ट लिखिए ट्रांसपिरेशन, चॉइस लिखिए फर्स्ट, ट्रांसपिरेशन,
सेकंड चॉइस लिखिए गैसियस एक्सचेंज, थर्ड चॉइस लिखिए प्रोटेक्शन, फोर्थ चॉइस लिखिए सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल। ठीक है, बताइए क्या होगा? बी होगा, सेकंड होगा। देखो ट्रांसपिरेशन भी करता है ये, बट ट्रांसपिरेशन इज टाइप ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, दो चॉइस मुझे याद था, बाकी दो याद नहीं था। मतलब ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज तो चॉइस में था और दो और थे ऐसे ही। तो बहुत लोगों ने ट्रांसपिरेशन बोला, ट्रांसपिरेशन करता है लेकिन ट्रांसपिरेशन इज टाइप ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो बिगर होल इज गैसेस एक्सचेंज, तो गैसेस एक्सचेंज तो ये करता ही करता है, सारे गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हेडिंग इज, नहीं नेक्स्ट हेडिंग नहीं, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑल्सो ऑब्जर्व, secondary growth is also observed in root and stem of gymnosperm। ठीक है, रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लिखिए, या क्वेश्चन क्या लिखिएगा, लास्ट पॉइंट मैंने कहा कि सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस इन रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म, रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, देख लिया। हाँ यार बोर्ड बहुत खराब है, क्या करूं, अब यही मिला। नहीं नहीं, परमानेंट मार्कर नहीं है, अभी देखता हूं कर लूंगा, ये बोर्ड मार्कर ही है ना। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए, कॉर्क कैम्बियम इज extra stellar in origin, cork cambium is extra stellar in origin, whereas vascular cambium, in case of dicot root and stem, vascular cambium in case of dicot root and stem is intrastellar in origin, ठीक है, इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? तो मैंने कहा कि जो कॉर्क कैम्बियम होता है, इट इज एक्स्ट्रा स्टीलर इन ओरिजिन,
नहीं, टेरिडोफाइटा वेसल नहीं है, ठीक है। एंड वास्कुलर कैम्बियम इन केस ऑफ डाइकॉट रूट एंड स्टेम इज इंट्रास्टीलर, इंट्रास्टीलर इन ओरिजिन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील के बाहर से ओरिजिनेट करता है, ये स्टील के अंदर से। समझ में आया? ये कहां से ओरिजिनेट करता है? अगर आप देखेंगे कॉर्क कैम्बियम जो है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स इज नॉट पार्ट ऑफ स्टील, तो ये हमारा एक्स्ट्रा स्टीलर हो गया। और जो वास्कुलर कैम्बियम है रूट में, तो पेरिसाइकिल के सेल और कंजंक्टिव टिश्यू से वो स्टील का पार्ट है, और वहां पे इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर मेडुलरी वे से वो भी स्टील का पार्ट है। समझ गए ना? नेक्स्ट हेडिंग इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हेडिंग इज cell the unit of life. Now question is how you can define cell. 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप सेल को सोचिए कैसे डिफाइन कीजिएगा। आपने पढ़ा होगा सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ पढ़ा होगा? नहीं, हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, which has independent existence and capable of performing all its function. Independent structure है and it is capable of performing all its function and it serves as स्टीलर। का मतलब क्या था? स्टील क्या होता है? एवरीथिंग इंटीरियर टू एंडोडर्मिस इज रिफर्ड एज स्टील, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी कुछ है सब कुछ क्या होता है? अरे भैया न्यू चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बताया तो ना। थर्ड ऑन, सेल इज ए स्ट्रक्चर, सेल इज ए स्ट्रक्चर which has independent existence which has independent existence and capable of performing all its function and capable of performing all its function. It is basic structure and function unit of, it is basic structural and function unit of life. It is basic structural and function unit of life. ठीक है। Capable of performing all its function, capable of performing all its function, ठीक। अब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो सेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग साइंटिस्ट को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। फर्स्ट लिखिए रॉबर्ट हुक। फर्स्ट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो था वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व सेल, पहला आदमी जिसने सेल को ऑब्जर्व किया। एंड ही ऑब्जर्व डेड कॉर्क सेल्स, ठीक है, जरा डाउन। ही वाज द फर्स्ट पर्सन, he was the first person
to observe cell. He observed dead cork cells. He observed dead cork cells. ईयर छोड़ो ना यार, ईयर कहां से? सेकंड, एंटोन वॉन लेवेनहॉइक. एंटोन वॉन लेवेनहॉइक. ठीक है. He was the first person to observe living cell. He was the first person to observe living cell. And he was the first person. He was the first person to construct microscope. He was the first person to construct microscope. ठीक है ना. थर्ड, रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन. He was the first person to observe nucleus. He was the first person to observe nucleus. Fourth, J. Hammerling. J. Hammerling. Through his experiment, he established that functioning of cell is controlled by nucleus. Functioning of cell is controlled by nucleus. मतलब जो न्यूक्लियस है, that is brain of cell. ठीक है. सेल के अंदर जितना भी काम हो रहा है सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस. ठीक है. फिफ्थ, रुडोल्फ विर्को. रुडोल्फ विर्को, VIRCHOW. ठीक है. He has given concept that is omnis cellula e cellula. He has given concept omnis cellula e cellula. Omnis cellula e cellula. That is all new cell arise from pre-existing cells. All new cell arise from pre-existing cell. ठीक है.
Next, sixth, slide in. A German botanist, a German botanist observed that a German botanist who observed that plants are composed of different type of cells. Plants are composed of different type of cells. ठीक है? Seventh, swan. SCHWANN, swan. A British geologist a British geologist, he observed that in case of animal, limiting layer of cell, limiting layer मतलब जो outermost layer, limiting layer of cell is cell membrane. Limiting layer of cell is cell membrane. Whereas in case of plant, it is सेल वॉल. मतलब ये इसने प्लांट को भी स्टडी किया. इसने कहा कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो मेम्ब्रेन है और प्लांट में इट इज सेल वॉल. नेक्स्ट पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसने एक हाइपोथेसिस दिया. ही हाइपोथेसाइज्ड दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल. मैंने कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो या तो वो सिंगल सेल है या सेल का बना हुआ. राइट. ही हाइपोथेसाइज्ड दैट every living organism is composed of cell or product of cell. Now, next is eighth one. KNOLL, Knoll and Ruska, RUSK. Knoll and Ruska. They constructed first electron microscope. They constructed first electron microscope. क्योंकि सेल का जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करना हो तो बिना माइक्रोस्कोप के आप नहीं कर सकते. तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि दे कंस्ट्रक्टेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सेल थ्योरी. फर्स्ट वन लिखिए. इट वाज प्रपोज्ड बाय स्लाइडियन एंड स्वान
It was proposed by Slidian and Swan. It was proposed by Slidian and Swan. पहले बहुत सारे पॉइंट थे सेल थ्योरी के, धीरे धीरे सब रिफ्यूट होते गए, अब 2 पॉइंट बचे हैं सेल थ्योरी के। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म every living organism is composed of cell or product of cell. Every living organism is composed of cell or product of cell. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, all new cell arise from pre-existing cells. All new cell arise from pre-existing cell. तो जितने भी नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही आएंगे। ठीक है, लिख लिया? चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाकी करें। थैंक यू।